Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 1st integers part 8. In this video we discuss on properties of multiplication. First property is closure property. If a and b are if a and b are any two integers, then a and b is also an integer. अगर कोई दो इंटीजर होगा एज फॉर एग्जाम्पल -13 और 6, तो इसका प्रोडक्ट भी, इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट भी, जिसे कितना आया -78, वह भी एक इंटीजर ही होगा. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्डर will be same. That means a multiply b is also equal to b multiply a. As for examples, -9 multiply -10 will also be equal to -10 multiply -9. Value of both is 90, will be 90. Now third property, associative property. If a, b and c are any three integers, then a multiply b multiply c. First we multiply first two term is also equal to a multiply b multiply c. Now we first multiply last two term. As for example, 6 multiply -15 whole multiply by -7. Now it will be equal to 6 multiply -15 multiply -7. 6 is multiplied by whole, that is -15 multiply -7. Both have the same value, that is 630. Here value of 6 multiplied -15, that is -90, and after -90 multiply by -7, finally we get 630. And here also first we multiply last two term, that is -15 and -7, then we get plus 105. After we multiply by 6, we finally get 630. Now fourth property is that multiplicative property of 1, that is existence of multiplicative identity. If a is any integer, then a multiplied by 1 will be equal to a 1 multiplied by a. Both have same value, that is a. Therefore the product of any integer and 1 is the integer itself. यानी किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो इंटीजर खुद, वो नंबर खुद मिलेगा. Here one more concept, one is called the identity element of multiplication और multiplicative identity of integer. 1 को multiplicative identity of integer कहा गया है या identity element of multiplication कहा गया है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर को वैल्यू जो है रिमेन्स सेम हो जाता है, यानी वैल्यू सेम रह जाता है, इसलिए 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिला. यानी आइडेंटिटी इसलिए कहा गया क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट property, that is multiplicative property of 0. If a is any integer, then a multiplied by 0 and 0 is multiplied by a, both have same value, that is 0. As for example, -73 multiply 0 and 0 multiply -73, both have same value, that is 0. यानी 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग जो है 3 इंटीजर को लेते हैं,
और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग 3 इंटीजर को लेते थे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी आर 3 यानी कोई इंटीजर मान लिए, और then we get a multiply distributive property of multiplication over addition and b plus c or b minus c, we get a multiply b, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस। तो पहला नंबर को पहले ब्रैकेट वाले के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो साइन रहेगा ब्रैकेट में वो साइन पुट करेंगे, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, और फिर ये नंबर को शुरुआत वाले नंबर को ब्रैकेट के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एज फॉर एग्जांपल -8 मल्टीप्लाई 10 प्लस -3, तो -8 मल्टीप्लाई 10 होगा, फिर प्लस -8 मल्टीप्लाई -3 होगा, और फाइनली जो वैल्यू है इसका भी -56 मिलेगा, इसका भी -56 मिलेगा। कैलकुलेशन करके हम लोग देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन बाय -1। If a is any integer, then a is multiplied by -1 and -1 is multiplied by a. Finally, we get -a. That is negative of integer, यानी -1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेगेटिव, उस इंटीजर का नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल 78 इज मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 78 का नेगेटिव 78 मिलेगा, और -1 भी 78 -78 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसका भी मीनिंग सेम हुआ कि 78 -78 का नेगेटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, और वैसे भी प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक साइन, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस के कंसेप्ट से भी हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे और फाइनली भी प्लस पुट कर देंगे अगर लाइक साइन रहेगा, सेम साइन रहेगा तो। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड -1, किसी भी इंटीजर और -1 का प्रोडक्ट जो है वह जो होगा नेगेटिव ऑफ द इंटीजर। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। दिस chapter will be continued in next video for remaining concepts from this chapter. Students, you have if any face problems or doubts regarding your maths book, you contact me on my WhatsApp number, that is 8709517840. Thank you.